Hi everybody, my name is Nitin and I am a Cajon player. So you have seen unboxing of a few Clapbox Cajons which you can see here. We started on the very first one was CB65, which is a premium Clapbox. Then we also unboxed the Flow Music is My Life model, which you saw on GoPro. And then this one was unboxed by my daughter Shivanjali, which again you saw on YouTube. Today we are here because we are unboxing and also we are going to be reviewing a flagship model of Clapbox, which is CB50. It's a black color Cajon. मैं बोल क्यों रहा हूँ? Let me show it to you. So this is Clapbox CB50. तो आइए हम बात करते हैं Clapbox CB50 की. Now folks, let me share with you amongst all the Cajons that Clapbox is selling, this is one of the best selling Cajons at this point in time. This is a flagship model. The reason that it's a flagship model is because the cost is to the returns ratio is absolutely fantastic. So this Cajon is pretty reasonable. The price is there on the screen for your reference, and I'm also going to leave the link of Amazon and other sites in my description so you can check how much it costs. But if you look at the cost is to benefit ratio is absolutely amazing. So आइए बात करते हैं इस Cajon के बारे में. So this Cajon is made up of oak wood. और थोड़ा सा पीछे चलते हैं हिस्ट्री में अगर आपको नहीं पता. So Cajon is an instrument which was made by the slaves back in the time when these slaves were not allowed to play musical instruments for entertainment. So they made an instrument out of a wooden carton that they used to have. और उसके आगे उन्होंने एक पतला सा wood लगाकर, जिसे obviously हम अब टापा कहते हैं, वो लगाकर they started playing and they found out a way to play it as an instrument and they started enjoying it. So होता क्या था, तो जो slaves थे उनको कोई परेशानी भी नहीं आती थी क्योंकि जब the army people they used to come and see, this was for them, this was a wooden carton, not this obviously जो उन्होंने बनाया था initially. So that's a little bit of history about Cajon, how it started, and slowly and gradually I'll share the name of the person who actually visited, saw that it's a wonderful musical instrument and how it kind of emerged. But that's a story, that's history, a little bit information. But हम अगर बात करें इस Cajon की, it's a very beautiful Cajon. The best part about this Cajon is in this price you get adjustable snare. So adjustable snare is something very interesting. Then you have a hole right behind it, as all the Cajons you've seen they have, and it's a complete black color Cajon with silver screws and the marking which says Clapbox, which you can see here. It is sturdy. In terms of its base, it is different from other Cajons because in other Cajons you don't get these fine legs. So these are quite sturdy legs which have been installed in this Cajon. So it's pretty sturdy, and आप इस पे बैठकर इसको पीछे की तरफ जैसे हम normally Cajon बनाने के लिए इसको lift करते हैं आगे से, you can do that and still it'll be absolutely fine, as good as possible. So I'm using my CB65 since long time, I'm using this since long time, I'm using all these Cajons, and trust me, there has been no problem with the bass. It's extremely sturdy. So that's about the Clapbox make. It's a pretty fine Cajon. Now let's talk about one major part about this Cajon. So the most interesting part about this Cajon is that it has adjustable snare, as I mentioned. So what you can do is you can remove the snare completely, which means the sound will be plain as a wooden box, and you can bring the snare back. I'm just bringing it back to top so that you can hear the sound. You can see the difference. Can you hear the difference?
But my recommendation to you is when you are playing cajon, then don't adjust this knob to the top. Bring it to around 75% so that you get a little, a combined sound of highs and lows combined with each other. So what happens is जब आप ये जो snare है इसको बिल्कुल ऊपर में adjust कर देते हैं, जो हम punch मारते हैं, जो beat लेते हैं, so जो lows होते हैं उसके साथ भी snare का sizzle बहुत high आ जाता है. So उससे क्या होता है कि कई बार snare के अंदर ही beats जो होती है वो दब जाती है, और जब आपका माइक उस साउंड को पिक करता है वो साउंड ठीक से पिक नहीं होती है, राइट. सो इफ यू वांट राइट ब्लेंड ऑफ साउंड, देन position it at around 70 to 75% is fine, and then when you'll play, then you'll hear that जो lows का section है वो भी perfectly blend हो रहा है highs के साथ, right. So I'll definitely play and share it with you how it sounds, but this is how the lows sound right now at 70%. This is how the lows sound at 0%, and this is how the lows sound. You see, you can hear that sizzle sound. It's not bad, some people like it, right? But I would suggest that you position it around 70-75%, and trust me, you will have it there. But I think you all have your own preferences, so I will not say that do this or do that. I will also suggest that you mix and match and see what works out well for you. Whatever works out well, it's a good thing. It's just our recommendation. You position it around 70-75%, so to get a good bass and the trebles as well. So that's a little bit about this cajon. So it has fine silver color screws on it, and the screws have been fastened very nicely, unlike many other brands in India where I know I have played some local made cajons as well. When I say local made cajons, I mean Indian cajons as well. उसमें जो difference होता है वो ये होता है कि उसकी जो finishing होती है, जो fabrication होती है वो fine नहीं होती है, because of which you get the edges, या फिर जो wood होता है उसका वो थोड़ा सा scrapped होता है, finishing बहुत fine नहीं होती है. That is the difference. What made me fall for this cajon was because I see that each and every part of this instrument is very nicely detailed. Now if I obviously you can't see it from distance. If you see the small line here, there's a curve here. Why is this curve here? It is there, but the point is it's for designing, but this has been done in a very, very beautiful manner. It's done in a very, very beautiful manner. तो आपको इसके अंदर कोई joints भी नहीं दिखेंगे, अच्छी बात ये है, नीचे भी है, ऊपर भी है, and it's a matte black cajon. Obviously it catches attention when you're playing this on the stage. So अब बात करते हैं हम इसकी sound की. So साउंड के लिए पहले मैं आपको उसको प्ले करके दिखा देता हूं, उसके बाद आप इसकी साउंड जो है वो सुन सकते हैं. So, जैसे कि आपने सुना, मैंने इसको तीनों जगह पे एडजस्ट कर स्नेयर को इसकी साउंड आपको सुनाई है. आई होप दैट यू लाइक द साउंड बिकॉज आई डिड. द बेस इज़ वेरी अप्रोप्रिएट. अब क्या है कि इसमें डिफरेंस, बिकॉज इट्स ओक वुड, इट डजंट बेंड टू मच, एंड बिकॉज इट डजंट बेंड टू मच इट प्रोड्यूसेस अ वेरी फाइन साउंड. अगर ये वुड बहुत ज़्यादा बेंड करेगा तो उसमें एक हॉलो साउंड आनी शुरू हो जाएगी, जो कि इसमें नहीं आती है. हॉलो साउंड का नुकसान ये है कि आपको बैलेंसिंग करने में बहुत दिक्कत होगी हॉलो साउंड की वजह से. इट थ्रोज इन अ लॉट ऑफ हमिंग. एक हॉलो साउंड, बहुत हमिंग जब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, दैट विल बी अ मेजर चैलेंज फॉर यू, विच इज टेकन केयर ऑफ हियर.
सेकेंड, एज यू मस्ट हैव हर्ड इन द फ्लो मॉडल, ये वाला मॉडल जो है फ्लो का, इसमें मैंने आपको बताया था कि जो साउंड, जो बेस है वो बहुत पंची है, यानी आपको कंप्रेशन यूज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जब आप इसको यूज़ करते हैं, आप माइक इंस्टॉल कीजिए एंड देन यू आर गुड टू गो। यू डोंट रियली नीड टू EQ वे टू मच, ठीक है, आपको अपने शोज के लिए थोड़ा बहुत EQ करने की ज़रूरत है, बट आपको बहुत ज़्यादा EQ के साथ छेड़ने की या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली रिकॉर्डिंग आप जब कर रहे हैं तो रिकॉर्डिंग में भी आपको इसको बहुत ज़्यादा EQ नहीं करना पड़ेगा। यू यूज़ अ नाइस कंडेंसर माइक, यू प्लेस इट राइट इन फ्रंट ऑफ दिस, you use another dynamic mic or condenser mic if you want, you place it behind it, and that's it, you are done, you're sorted. The point I was talking about was that this wood doesn't bend, so if you position a mic right behind it, वो mic humming pick नहीं करेगा, so the moment you hit it, it will pick exact crisp hit, which means जो लोज हैं वो बिल्कुल क्रिस्प पंची आएंगे। सिमिलरली जो हाइज हैं इसके वो भी एकदम परफेक्ट हैं। जो मेजर चैलेंजेस कॉन्स में आजकल आते हैं वो ये आते हैं कि जो साइड्स होती हैं वो अलग अलग तरीके से साउंड कर रही होती हैं। जो स्नेयर का सेक्शन होता है बीच का, जो सेकेंड सेक्शन, वो अलग साउंड कर रहा होता है राइट और लेफ्ट में। दैट बैलेंसिंग इज़ वेरी नाइसली डन इन दीज कॉन्स. So that is something which are very detailed and granular things that one needs to make sure that they are aware of. क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारे लिए जब कोई नया प्ले करने आ रहा है तो हमारे लिए एक वुडन बॉक्स है जिसके ऊपर बैठना है, प्ले करना है, बट जब आप थोड़ा सा और प्रोफेशनल साइड पे चले जाते हैं, देन आई थिंक इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ऑल्सो नो कि इसकी बैलेंसिंग कितनी अच्छी हुई है, इसके जो स्क्रूज हैं कितने अच्छे से टाइट हुए हैं या लूज हुए हैं, क्या आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं, अगर एडजस्ट कर सकते हैं तो क्या दोनों साइड की साउंड सेम आएगी कि नहीं आएगी, अगर इक्वल एडजस्टमेंट है तो. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम लोग दोनों हाथों से कॉर्न के स्नेयर्स को और लोज को प्ले करते हैं. तो जब हम दोनों हाथों से प्ले करते हैं तो अगर यहाँ की साउंड और यहाँ की साउंड अलग आएगी तो ऑब्वियसली इट विल नॉट साउंड गुड. सो कई लोग उसको अलग एडजस्ट करते हैं, मैं उसे बिल्कुल सेम रख के चलता हूँ, बिकॉज आई ट्राई टू यूज़ बोथ माई हैंड्स एज मच एज पॉसिबल, एंड स्पीड प्लेइंग के लिए वो ज़्यादा अच्छा रहता है. सो दैट्स अबाउट दिस Cajon. आई थिंक फ्रॉम साउंड परस्पेक्टिव, brilliant Cajon. From a value standpoint, it's an exceptionally brilliant Cajon. Looks के मामले में आप देख पा रहे हैं कि this is like a beautiful looking Cajon. It's a black Cajon जो कि आपकी स्टेज पे भी बहुत अच्छा दिखेगा जब आप प्ले कर रहे हैं. Similarly जब आप अपने covers बना रहे हैं तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं. It'll really sound good. I'll also make few covers and I'll share it with you so that you know how it sounds. So if you have any questions with regards to this Cajon, you can write in the comment section and I'll be happy to share with you my answers. And I think that's pretty much overall that is what the review was for, and I think I completely loved this Cajon. I played it for a little while before I created this video, and once you get your hands on this Cajon, I'm very sure that you're going to like it. Last point that I'm going to share is I have a CB50, I have a CB65, I've got flow, I've got disco. See, for every model there is a different tone, different sound, different pattern, but trust me, each and every one of them is absolutely brilliant in their context. And don't forget, this is Make in India, and that is something which is important for all of us to understand. And जितना आप इसे प्यार देंगे उतना ही ये आपको म्यूजिक देगा. कुछ लिंक्स हैं जो मैंने अपने कमेंट सेक्शन में डाले हैं, आप उन लिंक्स को फॉलो कर सकते हैं, एंड यू कैन बाय दीज Cajons, एंड आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट. Stay tuned. Don't forget to subscribe to my channel, and yes, there's a bell icon, so don't forget to hit the bell icon so that you get notified when I upload more videos. So till then, stay safe and keep playing.